भारत तिब्बत संघ और डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के इस कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे मुख्य अतिथि तिब्बत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान पेम्पा शेरिंग जी और भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी होंगे। नीलेंद्र जी भारतीय थल सेना के जज एडवोकेट जनरल भी रहे हैं देश के। साथ में आदरणीय कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने तिब्बत आंदोलन को जम्मू में स्थापित किया, और मैं भारत तिब्बत संघ से एडवोकेट सौरभ सारस्वत, राष्ट्रीय महामंत्री भारत तिब्बत संघ। अब मैं आदरणीय पेम्पा शेरिंग साहब से निवेदन करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस और आज की समसामयिक परिस्थितियों के विषय में आप लोगों से चर्चा करें। मुझे लगता है प्रेस वाला क्वेश्चन को पूछ के फिर प्रश्न पूछ के आंसर ही कर देते हैं। कितने यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे वो भी अलग। I am Pradeep Datta from Times Now TV channel. A very simple question: how do you see the latest provocation from China side in Tawang? India's strong response and your reaction to that? No, I have always been saying that China is feeling very, very insecure. Because last year, August, I was in Ladakh, along the same places where the conflicts are going on. And last month, the month before that, in October, I was in Tawang. So I have always sensed that the Chinese government is feeling very, very insecure. I have several reasons for this. One is that the Politburo members are very, very afraid of internal coup. So that is why there has been this rule within the leadership that not more than 3 members of the Politburo can meet without the express permission of the president. So why they are doing this? Because they are afraid of internal coup. And then Xi Jinping also made sure that the army generals are posted every year so that they don't build better relations with the cadres. So military coup is also out of the question. Then China must be the only country who spends more money on internal security than external security. Now you also think over it. The places where they are engaging in unprovoked belligerence against India, no people live in those areas. Then why do they keep doing this, irritating the Indian government? That is because if there is threat to the Communist Party in China, then they will attack one of these places, whether it's India or Taiwan or South China Sea, so that they can build nationalism within China so that communism does not fall. But this is a wishful thinking of the Chinese government. And it does not help anybody, because with these kind of activities against India, I think it will take many, many years for the Chinese government and the people to gain the trust of the Indian government and the Indian people. And that's not good for everybody. And how do you see the strong response, whether it was Galwan, whether it's Tawang, by the Indian troops? If China continues to think that India is as weak as India used to be in 1962, then they are wrong. Because India has developed so much over the decades. So India is also in a position to stand on its own. In this government also, we have seen Prime Minister Modi ji trying to reach out to the Chinese government. He visited China 2 times. And the Chinese president also visited India 2 times. So that was the intention of the Indian government. Because India has always been a peaceful country. Never ever an aggressor. They are always in the defensive position. And India has never attacked China after China's occupation of Tibet. Before 1959, there was never ever a border between China and India. Even now in India, you call it India-Tibetan Border Police, Indo-Tibetan Border Force. It's not Indo-China Border Force or Indo-China Border Police. So the sentiment of India and our people's respect for India, because we consider India as the land of Aryavrat, of all the learned people, because our language came from India in 7th century. Buddhism also came from India.
But we transliterated every available Sanskrit text those days into Tibetan language, because that was the advice of Shanta Rakshita, that you have your own language, because it's just invented just 100 years ago, and that too came from Kashmir, from Devanagari script, because Kashmir used to be a hotspot for intellectualism at that time. So we consider ourselves as an extension of one part of Indian culture, because India is very vast and India is very rich in culture. We are just one part of that ancient Indian wisdom. And we have preserved that in Tibet. No other country has done that, because we translated everything. We must have had the biggest transliteration house in the world in 8th century. So our people have very close relationship with India. Their respect for India is totally different. So now what China is doing is, we were at one time very afraid of demographic aggression. We thought that a lot of Chinese will come into Tibet and they will sinicize Tibet. Of course, there are more Chinese in Tibet today than earlier, but it's not increasing as much as we feared. So now they have adopted another policy, similar to what the colonialists used to follow, like in the United States, how they treated their native people, or the Canadians, how they treated their First Nation people. China knows, when you point that out about the colonial style boarding schools that they have set up in Tibet, and people tell them why you are doing this, they point fingers at United States and say how you treated your natives, or how the Canadians treated their First Nation people, the Australians, the Aborigines, or Maoris in New Zealand. They know it's wrong historically, but they are still doing it on Tibet. So with that, children between the age of 16 to 18, we are still checking how many are there below age of 6. All are put in boarding schools. No Tibetan language teaching, all Chinese ideology, Chinese history. So the aim is to turn every Tibetan youth into a Chinese. So if they are able to do that, now more than 80% of Tibetan children are in boarding schools, colonial style boarding schools. Now if the Chinese government is, you can imagine the consequences another 10, 15, 20 years down the line, that no Tibetans will be able to speak Tibetan. Then Tibetans will also lose this Aryavrat image of India. So this also has serious implications on India's security. I'm sure Major General can expand on this. So you said India of 2022 is different and stronger than what we saw in 1962. Of course. So how you see when some of the political party leaders, even Rahul Gandhi, they start doubting valor of our troops? What will be your message to such politicians? Yeah. See, development, the kind of infrastructure development that has taken place inside Tibet by the Chinese government, because they follow this thinking that if you have to protect the borders, then you have to repopulate the border areas. That is why they are building so many villages along the Indo-Tibetan border. Now, India also has to take similar steps, and I can see that India is taking those steps. It's not easy to build infrastructure on the Himalayas. It costs a lot of money, it takes a lot of time. And China, it's very easy. They just order something, rasta mein jo bhi ho, usko tod do, bana dete hain. But India, to acquire land itself, it takes time, sometimes. So these are small obstacles I'm sure the government is facing. But now, I have never seen Tibet. मैं तिब्बती हूँ मगर तिब्बत कभी देखा नहीं मैंने. I was born in South India. So मैं अपने emotional need को कभी इसको just to fulfill my emotional need, I go on the border areas to see Tibet from the border, from the fence. So I've been to Ladakh, I've been to Bumla, I've been to Lachen Lachung in Gangtok, I've been to Tuting. So all those are there. So India is not the same as India of 1962. India has grown. India has become a big man in Asia, and China cannot think that they can always contain India. This is not possible now. And what to the netas, your message to these politicians here, who keep on criticizing government for? Politicians may have different, because the opposition's job is to oppose. So
For the sake of opposition, I don't agree. But if you have constructive criticism, I think it's always welcome in democracy. But I cannot pinpoint any leaders because I have no responsibility. I have no command over the Indian administration. So it's up to the Indian leadership. But I believe that Indian leadership has taken a very strong position that unless there is disengagement from all sectors where Chinese have intruded, there will be no more normalization of relations. And also with regard to China, since 2010, Indian government has not been reiterating the statement that Tibet is part of PRC. I remember at that time the government took the position that if India has to accept the one China policy, then China should also accept one India policy. So India is standing its ground, and that is where the respect comes in. Chinese will not respect any weak power. That's why I tell Europeans also, if you want to be the pony, they'll keep riding you. Now you have to decide. And then many countries think, we have this Tibetan saying, butter and stone. Aapke bhi hoga shayad. You throw the stone at the butter loses. You throw the butter at the stone, also butter loses. If you think you are the butter, then you are wrong. With India also, I was just looking at some of the statistics. Import from China is 3 times more than India's export to China. Right? And similarly, there are very few countries in this world, including Australia, who has a surplus of trade with China. And because of all these surplus of trade, Chinese government gets this foreign exchange reserve. So they splurge it on Belt and Road Initiative, on artificial intelligence, on weapons, on space, everything, and that causes a lot of headache for the world. And we are all responsible for creating, including India today is responsible, despite all the rhetoric. Where is the business going? Because we import, India import more than $90 billion worth of products and exports only 30% of that. So who are we arming? I think there was a message from our friend in Ladakh, who is an environmentalist. He said that we give them the money and they attack us. So is this what we want to happen? I also tell in the international platforms that it is United States, it's Europe, it's the neighboring countries of China, Japan, including Taiwan. They put so much investment in China and made China strong. And internationally, I said, you don't have to read too many books. You just read one book, Kissinger on China. तब पता चलेगा कि चीन गिरते उठाया वेस्ट ने. तो who is responsible for all this? Of course, now, over the last 20-30 years, many countries expected that if China becomes part of the international community, they will become more responsible. Now everybody realizes that it's not happening. Also because of the Ukraine crisis in Europe, now everybody thinks that, okay, the immediate danger is Russia, but the long-term challenge is definitely China. So that awareness is there, that change in perception is there. But again, Europe is a problem because it's 27 different countries. And there are many issues on which you need consensus of all the 27 different countries, some you don't need. So when we visit Europe now, there is no coherence policy on China. सब अपने आप कर रहा है. Every country is developing their own China strategy, China policy, Indo-China policy. So there is no unified, same practice what the colonialists used to use against the colonists is being used by China against Europe because they are not united and they don't have a coherent, common foreign policy, the European side. China always plays that. So now all the countries around China, now who's afraid of India? Nobody is afraid of India because India is being friendly, maybe sometimes a little bit bossy over smaller neighbors, but not like China. When it comes to China's relationship with the United States, they always complain that the United States is not treating us as equals. But when China's relation comes with India, they never treated India as equal. Whether you are a big country or a small country, you are a sovereign nation, so you deserve that due respect.
But then China's aim is to contain India so that there is no power base to challenge China's hegemony in the Asian region. Now, how long can that go on? If you have that kind of a mentality, then cooperation will be very difficult. We have always, His Holiness the Dalai Lama has always said we appreciate better relations between India and China because they are the two most populous nations in the world. And historically, we were an independent state. At those days, we were the buffer between the two most populous nations. Now, after we were occupied by China, then you came close. Then 62 war happened. There was no improvement till Rajiv Gandhi ji went to China in 1988. Now everybody, when all these small things happen on the border areas, now every Indian starts rethinking. The memories of 1962 was brought back. So you're opening an old scar, an old wound, and that will take time to heal. And if it continues like this, it's not going to help Asia, it's not going to help the world, it's not going to help anybody, it's not going to help China the most. सर अब थोड़ा सा हिंदी में, हिंदी चैनल भी यहाँ पे 2 सवाल है सर। पहला, मेरा जन्म साउथ इंडिया में हुआ तो मेरा हिंदी में थोड़ा कमी है। जी हिंदी में सर थोड़ा सा, जिस तरह से चीन को हम लगातार देख रहे हैं, एग्रेसिव हो रहा है, आक्रामक हो रहा है, चाहे वो पहले गलवान हो और अब जिस तरह से तवांग में हो रहा है, आपके व्यक्तिगत राय क्या है चीन की इस नीति को लेकर? हमने अभी जो अंग्रेजी में कहा वही है कि हमको ये लग रहा है कि चीन बहुत इनसिक्योर है आजकल। इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब चल रहा है, जो डोकलाम में हुआ, गलवान में हुआ, अभी तवांग में जो हो रहा है। अगर इनसिक्योर नहीं है तो फिर उस जगह में हम उस जगह में जा चुके हैं, कोई रहता नहीं है वहाँ, जीवन नहीं है, वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है, तो लोग रहता नहीं है, तो ये आक्रमण बेवजह आक्रमण क्यों कर रहा है, अनप्रोवोक्ड आक्रमण क्यों कर रहा है, इंट्रूशन क्यों कर रहा है? हर बार वहाँ से होता है, इंडिया की तरफ से नहीं होता है। इंडिया बहुत शांति का देश है अभी तक का जो है, हर बार डिफेंस में लगा हुआ है, ऑफेंस में नहीं। सर अंकित टीवी9 से मेरा एक सवाल है जी। जो भाषा चाइनीज PLA समझती है, उसी भाषा में आपको लगता है कि भारतीय सेना उसको जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग? सर सामने देखिए, अगर वो नहीं किया तो फिर चाइना आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा कभी भी। आप अपने स्थिति पे जारी रहो, तभी रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। अगर आप अपनी जगह से हिल गया, तो मैं दूसरों देशों को भी बोलता रहता हूँ कि आप गधा बनना चाहते हैं तो गधा बनो, फिर चीन आपको चलाते रहेगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहूँगा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। वो ये है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा सिक्योंग जी ने कहा कि चाइना में इनसिक्योर की भावना है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि अभी जो बॉर्डर पर यांगसे में तवांग के पास जो घटना हुई, ये बहुत सोच समझ के सुनियोजित आक्रमण था, ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था। और उसका कारण ये था, जैसा कि बताया सिक्योंग जी ने, कि पहला जो उनकी आंतरिक स्थिति है और कोविड से जो हुआ, तो वहाँ पर जो अभी उनकी कांग्रेस हुई 20 कांग्रेस, तो उसमें वहाँ के नेतृत्व को ख़तरा महसूस हो रहा था, और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो तैवान में कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है, हांगकांग में भी शांति नहीं है, तो उनका जो गलत रिएक्शन था, उन्होंने समझा कि यदि हम सरप्राइज से इंडिया पर अटैक करते हैं तो ये जो हमारी वहाँ पर यांगसे में पोस्ट थी, जो कि हमको टैक्टिकल एडवांटेज देती है, ऊंचाई पर थी, और वो इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे जिससे कि पॉइंट ऑफ डोमिनेट कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने ये सरप्राइज़ अकस्मात हमला, हम लोगों के लिए अकस्मात, उनके लिए सुनियोजित था, वो उन्होंने किया। और वो उसका किसी कारणवश
एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया। इनको देखते हुए जो आपका प्रश्न था कि 2 वर्ष पहले जो उधर गलवान में हुआ, तो भारत तैयार था, हमारे सैनिक बिल्कुल तैयार थे, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पर न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी, मतलब संख्या में चीन ज़्यादा थे भारतीयों से, लेकिन उसके बाद हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा था, तो उन्होंने उनके ऊपर ज़ोर से हमला किया। ध्यान में रखने की बात यह है कि चीन की नीति हमेशा आक्रामक रही है। वो शांति में विश्वास नहीं करता, वो अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। तो इस समय जैसा कि खबर आ रही हैं कि अपनी एयरफोर्स को वो काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसको देखते हुए भारत का भी अभी आपने देखा होगा कि अग्नि का एक्सपेरिमेंट ट्रायल हुआ, जिसकी रेंज काफ़ी बड़ी है, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल जा सकते हैं, तो वो आवश्यक है। एक प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग जो यहाँ से पूछा गया, जिसमें उनका राहुल जी का नाम लिया गया, तो उसके लिए शायद अब ये आवश्यकता है कि 1959 में जब वहाँ से परम पावन दलाई लामा जी आए थे, इतने वर्ष हो गए, इतने दशक निकल गए, तो इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया इशूज़ कम्स आउट विद अ वाइट पेपर। श्वेत पत्र की आवश्यकता है कि हमारी क्या नीति है, इसको देखते हुए, क्योंकि जो कोरोना वायरस हुआ उसमें भी उसका क्या कारण था, किस ढंग से वो फैला, उसका प्रभाव, कैसे कैजुअल्टीज़ हुई, तो उसमें चीन की नीति जो थी वो संदेह की थी। तो पहली चीज़ आवश्यकता यह है कि सिक्योरिटी के डायमेंशन को देखते हुए एक वाइट पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी सरकार का आना चाहिए, जिससे कि किसी को कोई संदेह नहीं रहे कि हम क्या चीन के विषय में सोचते हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारी नीति है। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी ये भी है, कुछ दिन पहले जहाँ पर ये हमारा अग्निवीर की स्कीम आई थी फौज में, तो देश की सेना, और सेना से मेरा यहाँ पर अभिप्राय तीनों विंग के लिए है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें केवल भारतीय नागरिक सेना में भर्ती हो सकते हैं। और जो आर्मी एक्ट और बाकी 2 एक्ट हैं, उसमें एक अपवाद किया गया था, और जो कि था नेपाल के लिए, कि नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। और आप सबको पता है कि गोरखा रेजिमेंट्स में हमारे एक्सक्लूसिवली कई रेजिमेंट्स में केवल नेपाली ही थे। तो अब आवश्यकता है कि उसी तरह से जो हमारे तिब्बती युवा हैं, उनको भी भारत की सेना में स्थान मिलना चाहिए, और उसके लिए पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट के अनुसार केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय ऐसा कर सकता है। दूसरी ये आवश्यकता है जिसकी ओर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, ITB उसमें हैं, SFF में, हाँ 22 वगैरह में है, लेकिन सेना में भी आने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि 3488 किलोमीटर से लंबी जो हमारा चीन की सरहद है, उसको देखते हुए भारतीय सेना में मैंडरिन और उससे अधिक तिब्बत भाषा के अधिक जानकार होने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो कुछ भी बातचीत हो रही है, अभी तक हमारे पास वो लैंग्वेज के एक्सपर्ट उतनी संख्या में नहीं है। तो ये भी आवश्यकता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था। और ये भी आवश्यकता है कि तिब्बत को उनके साथ भारत के जो पौराणिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, संस्कृति को देखते हुए, बौद्ध धर्म को देखते हुए, साहित्य को देखते हुए, मेडिसिन को, मेरे ख्याल से या तो एक एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी और नहीं तो कई विश्वविद्यालयों में तिब्बतन अफेयर्स एंड तिब्बतन इश्यूज़ के ऊपर डिपार्टमेंट्स बनने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पर आपके सामने आज उपस्थित हूँ, भारत तिब्बत संघ की ओर से, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, तो हम लोगों के 3 मुख्य और स्पष्ट उद्देश्य थे जब इसकी स्थापना की गई।
कि पहली चीज़ जैसा आपने कहा कि हमको देर इज़ नथिंग लाइक इंडो चाइनीज़ बॉर्डर, इट इज़ इंडो तिब्बत बॉर्डर। तो ये जो हमारा सीमा के ऊपर विवाद है, इसको हमको एक पॉजिटिव और असर्टिव रुख अख्तियार करते हुए इसको सॉल्व करना चाहिए। पहली चीज़ इसमें यदि आक्रामक नीति रखनी है, सैनिक हमारे रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, सो बी इट, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने देखा 16 राउंड ऑफ टॉक्स हुए, जिसमें कि हम लोगों ने गलवान के बाद ये प्रयास किया कि बातचीत के ज़रिए से हम इसको सुलझा सकें, लेकिन संभवतः वो कामयाब पूरी दृष्टि से नहीं हुआ है। तो इसके लिए सेना की प्रिपेयर्डनेस, सेना की तैयारी परम आवश्यक है। और जैसा आपने कहा कि हमारे रिसोर्सेज, उन्होंने जैसी सड़कें बनाई हैं, उन्होंने जो हेलीपैड, एयरपोर्ट्स बनाए हैं, एक्विजिशन किए हैं, उन सब का हमें कोई और विकल्प नहीं है, हमें जवाब देना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ दूसरा हमारा जो भारत तिब्बत संघ का उद्देश्य है वो ये है कि आपने जिक्र किया था, सिक्योंग जी ने, आपने इंडोक्ट्रिनेशन का, और वहाँ के जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, बहुत ही बुरी तरह से वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। इट इज़ नॉट ओनली मियरली ह्यूमन राइट्स विच आर बीइंग डिसरिगार्डेड, जेनोसाइड हो रहा है। तो उसको देखते हुए तिब्बत की स्वतंत्रता, तिब्बत का ऑटोनॉमी के इशू पर भी हमको क्लियर एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और यदि आवश्यक है तो ये जितने भी मामले हैं, इनको विश्व स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पर और अन्य फोरम्स में इसको उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य ये है कि भारतीयों की आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से कैलाश मानसरोवर हमारे लिए बहुत ही सम्मान और आदर का विषय है। तो भारतीयों को वहाँ जाने की स्ट्रेट इजी एक्सेस होनी चाहिए। बस ये मुझे आपके सामने रखना था। और एक जी, मुद्दा ये है, जब बॉर्डर का बात करते हैं तो ये बॉर्डर किसने तय किया? वो 1914 में ब्रिटिश इंडिया और आज़ाद तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन साइन किया हुआ है। तो हमारे तिब्बत की तरफ से ये मानना है कि अभी का जो मैकमोहन लाइन का जो बॉर्डर है, उसको हमने साइन किया है, तो हमको भी इसको मानना पड़ेगा। तो भारत के तरफ से ब्रिटिश इंडिया से ये लीगेसी ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए भारत को भी सोचना पड़ेगा। अगर मैकमोहन लाइन को मान रहे हो तो तिब्बत का आज़ादी की स्थिति भी मानना पड़ेगा। Coming to another question, sir, we have got another partner in crime with China, that's Pakistan. A recent statement by Bilawal Bhutto, where he had been using that obnoxious and ridiculous statement against Prime Minister Narendra Modi. How you see, and what will be your suggestion to a foreign minister sitting on a responsible position and making that irresponsible remark? I think India's foreign policy has been too much focused on Kashmir for too long. Now India's foreign policy is becoming larger, bigger, as per the status of Indian government. Any politician speaking from Pakistan, I think we all know why they are saying it, because they are dependent on China for everything. You have very beautiful name also, higher than sky, sweeter than honey, deeper than sea, because they have Chinese expressions like this. So this geostrategic fight over the region from China and India, not so much from India, but more coming from China. But then sometimes Chinese say that why is India getting aggressive, because we are not attacking India in there. But what is this other than attack, what is happening on the border? Why do they need to do this? So China also needs its allies, so they keep some governments at their disposal to do what they ask them to do. And if countries, I'm saying not just Pakistan, even Nepal, I feel that even if it's a sovereign country, they don't have much freedom to decide for themselves. It's either pressure from India or from China. Now Chinese pressure is becoming more. So चीन का जो है वो कभी भी पैराडॉक्स है,
कुछ बोलते हैं, कुछ और करते हैं, रूल्स में कुछ लिखते हैं, करते हैं कुछ है, इंटरनेशनली भी ऐसे हैं और अंदर भी ऐसे हैं। यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बिलावल भुट्टो के लिए क्या जायज़ है? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आपको लगता है सर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ये सब अभी देश के बीच में है और हमारा नीति ये है कि हमारा अभी स्थिति ऐसे है कि हम दूसरों को बोलने का काबिलियत भी नहीं है, मगर वी आर अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस फिजिकल भी होता है, वर्बल भी होता है, मेंटल भी होता है। वी आर ऑल अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ, एंड दिस आर अननेसेसरी एक्चुअली। As people, I think Pakistan and India are much more closer. Before independence, we were all together, no? सर, As तिब्बत को one लिबरेट India. करवाने का अभी तक तिब्बत को लिबरेट करवाने का रोड मैप है आपके पास कोई? ये हम लोग अभी स्वायत्तता मांग रहे हैं, आज़ादी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अभी ऑटोनॉमी मांग। परम पूज्य जी ये मानते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, क्योंकि अगर आज यूरोपियन यूनियन नहीं होते तो यूरोप के देशों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया होगा। तो यहाँ भी अभी का स्थिति अलग है, मगर भविष्य में सबको शांति रहना चाहिए। सब हम जितना चाहे तिब्बत को हनुमान जैसे उठा के कहीं और बिठा नहीं सकते हैं। तिब्बत तो तिब्बत में ही रहेगा, चीन में ही रहेगा, भारत में ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग नेबर्स हैं, पड़ोसी है, तो फिर सब साथ में मिलजुल के शांति से रहना सीखना होगा। अभी जो चीन कर रहा है वो उसका बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल ऑपोजिट है, वो नहीं चाहिए हम लोगों को जी। जहाँ तक भारत तिब्बत संघ का प्रश्न है, तो यहाँ पर पूरे देश के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे पास आज के इस मीट के लिए तवांग से 4 हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, जिससे कि वहाँ के साथ हमारा जुड़ाव बिल्कुल बना रहे और उनके विचार हम तक पहुँच सके। ये भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।